only if you are able to build a plan. Let's say if you are able to build a 90-day plan, but probably if you have not built such a plan before, you will not be able to do so. So maybe build a 30-day plan. If you can't do that, build a 7-day plan. If you can't do that, just get a piece of paper, write a plan for the day. So once अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप भी PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम कर सके। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे। स्पेशली हमारी हर सेशन में कोशिश होती है कि हम अपने यंगस्टर्स के उन मसाइल पे बात कर सकें जो आजकल के दौर में हम फेस कर रहे हैं और उनको ओवरकम भी कर सकें, और स्पेशली उन अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर सकें। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो डिग्रीज हमारे पास हैं, लेकिन डिग्री के बाद हमारे पास ऑब्वियसली जॉब नहीं है या हमने अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना है। तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें लाजमी ध्यान रखना चाहिए? तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। 𝐶 राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं सेलर डाउनटाउन के। तो मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरा ख्याल है स्पेशली मैं इस चीज़ को फैसिनेट भी करना चाहूँगी। इट्स रियली इम्प्रेसिव कि इतनी यंग एज में आप अपना एक प्रॉपर सेटअप लेकर चल रहे हैं, और ऑब्वियसली ये आपकी प्रॉपर मेहनत और उस काविश का नतीजा भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी किसी और फील्ड की तरफ चले जाते हैं। तो इसी से सर मैं बात करूँगी कि जिस तरह से आपने भी स्टार्ट किया, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी और नहीं भी, तो आपने जब स्टार्ट किया उसी से लिंक करूंगी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि हमारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से, और हमें या तो उनको अवेल करने का नहीं पता है। राइट, सो देखें, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट यू हैव टू वर्क विद योर ओन हैंड। आपको जो भी ऑर्ड्स मिले हैं आपको उसी से प्ले करना होता है, ठीक है? तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि the value goes from a point of higher to a point of lower. So जहाँ पे भी वैल्यू क्रिएशन आप पॉसिबल है, आप सिर्फ वहाँ पे ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज दैट देयर इज़ अ मेजर शॉर्टफॉल इन टर्म्स ऑफ लेबर आर्बिट्राज। लेबर आर्बिट्राज का अगर बेसिक मतलब ये दिया जाए, सो बेसिकली इफ़ यू जस्ट गो एंड लुक एट what an average person in the US they make around $36,000 per year as a median, and that's just like 50th person in the US. But an average salary of a Pakistani right now, and unfortunately, very unfortunately, is $1,000 per year. Yes. That's just 3 lakh per year. If you put it down to monthly, that's less than 25,000. So what you understand is, if you are able to be skillful, if you are able to work as efficiently as any US person, then there is no reason why you should not be able to earn at least 10x of what an average Pakistani makes, because it will still be 4 times less than an average US person makes. So at the end of the day, you have to find the skill sets, and then you have to be a master and hopefully better than what an average US person does in that field. Exactly, true. अच्छा सर, बेसिकली यू आर वर्क फ्रॉम लाइक अमेज़ॉन के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत सारा अपने आप को एक नई स्ट्रेटजी के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो बहुत से स्कीमास और बहुत सी आप कह लें मिथ्स भी होती हैं। तो मैं इसी चीज़ पे बात करूँगी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आर यंगस्टर्स। व्हाट आर दीज ट्रेंड्स ऑफ अमेज़ॉन जिनको हम परसू कर सकते हैं? स्पेशली मैं अपनी ऑडियंस के लिहाज से पूछूँगी टू मेक आर फाइनेंस बेटर। राइट, so let's just start with what they should not be pursuing. So they should not be pursuing anything, but especially Amazon, since we are talking about it, as a get rich quick scheme. So they should not be taking a look at anything as a get rich quick scheme, because anything that is too good to be true is actually too good to be true. Yes. So when you take a look at Amazon or any other skill, what you should be taking a look at is the skill, is the learning, and how you could add value to businesses. Yes. So at the end of the day, in Pakistan, majority of the businesses have focused on, launching a business. Again, launching a business is a viable business model, but it's not for everyone. And unfortunately, the current Pakistani crop of
VAs, let's say, if you want to call it that way, or let's say assistants or Amazon managers are not able to, or at least they are not able to build a team good enough to launch brands. They're able to launch on Amazon, but they are not able to launch brands just yet. Again, if you take a look at India, they have been able to do that because they have companies like Infosys. They have companies who have worked on the very top, and then those employees go and make their companies, right? So they are able to build those teams, build the marketing, build the branding, and then they are able to do that. So as of now, but I think anyone who is currently looking at Amazon, or maybe they're not, they're just starting out, or they have not been able to start in the best way possible, they should be looking at doing a deep dive on the skills which an Amazon seller might be in the need of, and they should be focusing on one skill. For example, you could just be a reputation manager for one Amazon brand. You could just be a compliance manager for Amazon brands. You could just be a supply chain manager for Amazon brands. A friend of mine just recently launched an agency. He's from Karachi, Haseeb is the name, and he's just launched a supply chain management agency for Amazon brand because it's very unique supply chain workings for the logistics of any Amazon brand. So you can deep dive, micro skills are the way for anyone who's trying to start in the Amazon space or any other space right now. Perfect. और thirdly, specifically हम जब youngsters को देखते हैं तो बहुत से ऐसे obstacles हैं कि हम जब भी कोई start लेने की कोशिश करते हैं just like Amazon में या किसी और online earning की तरफ, तो बहुत से obstacles हैं और हमें समझ नहीं आता how to overcome that issues. तो इस perspective पे भी थोड़ा सा हमें guide कीजिए. Sure. So for this one, I will go back to something that a teacher of mine told me that. Basically a teacher of mine, and then also a self-help book from Nicholas Hill, and that was, if you can just plan something, whatever it is, it might not be that grand of a thing. If you can plan something and then get that thing done, you are going to be better than 90% of the people, because 90% don't take action. So only if you are able to build a plan, let's say if you are able to build a 90-day plan, but probably if you have not built such a plan before, you will not be able to do so. So maybe you build a 30-day plan. If you can't do that, build a 7-day plan. If you can't do that, just get a piece of paper, write a plan for the day. So once you are able to plan your things, only then you can pursue anything. Exactly. So if you're learning anything, you have to plan it. So for example, let's say I am taking this course for Amazon. Okay, that makes sense. I need to complete this course by 2 weeks, by 4 weeks, or whatever the time frame is. But if you don't have a plan, then you will never get anything done, because you will just go 70%, then you will see nothing happening, and then you will see something else that has a very good reel on TikTok maybe, and then you will see, okay, this one is not a good opportunity, that is a great opportunity. So, let's just pursue that. And that is the shiny object syndrome. Unfortunately, we all get accustomed with that. I'm guilty as charged myself. But at the end of the day, you have to build a plan and follow through. And I can guarantee you will be better than 90% of the people in any field. So lastly, what do you suggest, any message from your side to our youngsters? Basically, the thing is, I think I've said this before as well. If you can build a plan, you have to follow through on that. Otherwise, it's not just a plan; it's just a wish, And if you are able to build a plan and then get that thing done, you are better than 90% of the people. And in any field, if you want to become successful means you have some good reputation, you have some good financial statement as well. If you want to improve that, so you have to build a plan, follow through on that, and then try to see what success looks like and try and see what failure looks like. Because only then you will be able to judge yourself. Because the company who's going to hire you is going to judge you with salary. Exactly. But you need to judge yourself first so that you are able to predict that and then get the salary of your choice or money of your choice. Very true. And it's really important for us कि अगर हम कोई भी इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं तो हमें अपनी सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ अवेयरनेस और या इसको हम सेल्फ इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं कि आप लोगों के पास उस तरह से प्री रिक्विजिट्स हैं या आप लोगों ने अपने अंदर क्या स्किल सेट है जो हम अपनी उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू
सो मच ऑल ऑफ यू। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट और इट्स रियली एक्नॉलेजेबल फॉर अस कि अगर हम इस चीज़ से कुछ सीखें और उसे अपनी पर्सनल लाइफ में परसू करें ताकि हम सक्सेस की तरफ जा सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।